Hello students, I hope you all are doing well. So today the topic will be from Golgi apparatus, or you can say Golgi complex. So earlier, just as a revision, we have studied about nucleus, prokaryotic eukaryotic cell, and also the just in information about endoplasmic reticulum, right? So now let's talk about Golgi complex. So over here, as you can see, this Golgi complex has sac-like structures, isn't it? And these sac-like structures, what are they actually? This you have cis phase and you have trans phase. These are the two phase actually, and there are cisternae, fusing vesicles, and lumen. Lumen is basically the structure, or you can say the wherever any liquid which has to be transported, or protein which has to be transported, is going to enclosed inside it, and then it is going to be a fusing vesicle, and then it is going to transfer from one place to another. So basically, what is Golgi complex and what it does? Let's talk about it. So it is made up of 5 to 8 hollow fusing vesicles and flat slack sacs placed parallel to each other. Number 2 is these sacs are called as cisternae and are filled with different enzymes. These enzymes are very helpful in making the proteins. So the protein coming from endoplasmic reticulum are enclosed in vesicles which come towards Golgi complex via cytoplasm, and they fuse with the formation phase of the Golgi membrane and empty their content in the cisternae. ठीक है, तो राइबोसोम से जो प्रोटीन आता है वो गोल्गी मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाता है, मिल जाता है, और जो भी उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन आया है वो फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है. So as they pass through the cisternae, they are chemically modified with the help of enzymes. क्या they are the protein, actually the protein which is being produced with the help of nucleus, and then your endoplasmic reticulum has made the protein, and now for further modification उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है या डिलीट करनी है with the help of enzyme. ये प्रोसेस कहाँ होता है? Golgi complex में. So they are again packed in the vesicle, क्योंकि अगर आप खाना भी पकाते हो, आपको अपने स्कूल लेके जाना है, तो आप टिफ़िन में लेके जाते हो, राइट? तो वैसे ही ये चीज़ें प्रोटीन ट्रांसफ़र करने के लिए ये वेसिकल में पैक होते हैं. कौन पैक कर रहा है? Golgi complex. So these vesicle exit from the maturation phase. The cisternae work like a packing department, and that packs and distributes substances. So what are the function? Of course, so first of all, this we will talk about this introduction to scientists later on. First, let's see what is the function. So Golgi complex is the secretory organ of the cell because it secretes out the protein, because Golgi is sending all the protein out from the cell, and it modifies, sorts, and packs material synthesized in the cell, that is enzyme, mucus, protein, pigment, etc., and dispatches them to various targets like plasma membrane, lysosome, etc. So it's like a packing department, and it produces vacuoles and secretory vesicles. ठीक है. Now this Camelio Golgi described the Golgi complex for the first time. Who found that there is some structure called, or you can say cell organelle called as Golgi complex. So he developed the staining technique called as black reaction, and with the help of it he studied nervous system. So he won the Nobel Prize of 1906 along with Shantigo Kajal for the study of structure of nervous system, and this is Nobel Prize, the topmost prize in the field of science. All right. And so this function of Golgi complex is also in the formation of cell wall and plasma membrane and lysosome. What is lysosomes? Let us talk about what is lysosomes now. Okay, so we already know that certain enzymes are responsible for the digestion of food, isn't it? So even the lysosome has certain enzymes which can digest its own cell. ठीक है. तो लाइसोसोम का क्या होता है? पहले पहले तो वो सिंगल मेम्ब्रेन है और उसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइम कॉम्प्लेक्स. सो ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल, ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड. Lysosome digest the waste. Lysosomes are simple single membrane bound sac filled with digestive enzymes. Also one of the function which I would like to add for the lysosome is कि अगर कोई सेल डेंजरस हो जाता है, जैसे कि कोई सेल बहुत ज़्यादा तादाद में अपने आप बढ़ता है, या फिर किसी सेल में बहुत ज़्यादा पॉइजनस मटेरियल जमा हो जाते हैं, तो वो सेल ख़राब हो जाता है. तो उस केस में क्या होता है? लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से वो जो सेल होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है. तो लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड ए सुसाइडल बैक. वाई? बिकॉज एक बार वो बम की तरह होता है, अगर वो फट गया तो पूरा का पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाएगा.
राइट. सो इस वे से जो हार्मफुल सेल होते हैं हमारे बॉडी के वो मरते रहते हैं और लाइसोसोम की वजह से ये होता है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस. इम्यून सिस्टम, दैट इज इट डिस्ट्रॉयज वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल. राइट. लाइसोसोम के पास ऐसे हानिकारक पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वायरस तक उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. डेमोलिशन स्क्वाड्स, यानी कि इट डिस्ट्रॉयज वर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनल एंड ऑर्गेनिक डेब्रिसेस, दैट इज आइटोलाइसिस. जैसे कि मैंने कहा, वो खुद ही अपने सेल को मार देगा अगर उसे मालूम पड़ता है कि ये जो सेल है वो हार्मफुल हो गया है बॉडी के लिए. It is also called a suicidal bag. Why? Because when a cell membrane old or damaged, lysosome burst and enzyme digest their own cells. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको. And during starvation, lysosomes digest stored protein and fats. So जो stored protein और fats होता है उसको use कैसे हम कर सकते हैं? Obviously with the help of digesting it. So who is helping that till that time when you are fasting or when you are not eating? So in that case, lysosome going to burst. And during starvation, it is going to help you to provide energy from stored proteins and fats. Now, very important, what is mitochondria? Now, mitochondria, again, we have talked about earlier also that it has its own DNA and it is double layered. As you can see, you have inner membrane, you have outer membrane, that is double layer. And even in mitochondria, you have cisternae. And this cisternae is filled with matrix. Matrix is actually like, again, material which has a lot of enzymes and which is helping the mitochondria to produce energy. So each cell require energy and this energy is produced by the mitochondria. Under the electron microscope of mitochondria seen as double membrane structure. The outer membrane is porous and the inner membrane is deeply folded. As you can see, बाहर का जो लेयर है वो folded नहीं है, सिर्फ inner layer है वो है folded. And these folds are called as cistae. Okay. And cristae यानी कि folds. And the inner cavity is filled with proteinous gel-like matrix containing ribosomes, phosphate granules and DNA. यह हमेशा याद रखना, mitochondria has its own DNA. Alright, जैसे न्यूक्लियस होता है उसके पास अपना DNA है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना DNA होता है. Okay. And therefore it can produce its own protein. And with the help of enzymes, mitochondria oxidize carbohydrates and fats in the cell. The energy released in the process is stored in the mitochondria in the form of ATP. ये भी याद रखना, जैसे कि हम पैसे देकर कोई चीज़ खरीदते हैं तो वैसे ही बॉडी में एनर्जी करेंसी यानी कि इट इज़ कॉल्ड एज ATP. सो ATP इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो कितने ATP निकल रहे हैं, जैसे कि कॉइन्स होते हैं ना, हम कुछ कॉइन लेके खरीदते हैं तो वैसी एनर्जी इज़ ऑल्सो अ you can say which is released by mitochondria. It is in the form of ATP. So it is called as adenosine triphosphate. Again, it is a GK. I can give you the question on that. What is the full form of ATP? And what is the powerhouse of the cell called? It is called as mitochondria. Plant cells have less mitochondria than animal cell because animal is always moving and it needs a lot of energy. That is why we have more mitochondria in our cell as compared to the plant cell. Mitochondria are absent in RBCs. हमेशा याद रखना, रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBCs में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं. And due to this, the oxygen which is carried by them is not used for themselves. Now this is a vacuole. So vacuoles are the storage sac of solid or liquid contents. तो बेसिकली जहाँ जो भी चीज़ें स्टोर करनी होती है, जैसे हमारे पास एक स्टोर रूम होता है, राइट, वैसे ही सेल में स्टोर रूम को क्या बोल सकते हैं, इट इज़ वैक्यूल. वैक्यूल में खाना भी स्टोर होता है प्लांट एनिमल का, जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, बेसिकली इट हैज़ लार्ज वैक्यूल्स. द सेल इज़ हैविंग लार्ज वैक्यूल्स इन देम वेयर ऑल द प्लांट्स स्टोर देयर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और यू कैन से any carbohydrate, any form. So this is vacuole. So they don't have any typical shape or size, and the structure of the vacuole change according to the need of the cell. And vacuole is bound by single membrane, just like lysosome. Now functions. To maintain the osmotic pressure of the cell. Osmotic pressure का मतलब फिर से बता देती हूँ कि जब पानी सेल के अंदर आता है, ठीक है, तो उस सेल पे एक प्रेशर आएगा. अगर वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो कि सेल उसे सह ना पाए, तो वो सेल बर्स्ट हो जाएगा, राइट. बट सेल बर्स्ट नहीं होता है. क्यों? बिकॉज वैक्यूल्स दे
मेंटेन दिस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। जैसे कि एक बलून होता है, बलून पे पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो बलून फट जाएगा, राइट। बट देन वैक्यूल की वजह से क्या होता है कि इतना प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो पाता है सेल पे कि वो बर्स्ट हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. So to store metabolic byproducts and end products, example glycogen, protein, water, etc. It's stored. All the glycogen, protein, water, everything is stored in vacuoles, because I'm again telling you it is a storehouse of a cell. And in animal cell they store waste products and food, while in amoeba it stored food before digestion. Again I repeat, in animals यानी कि animals में क्या होता है, waste product and food, it is getting stored in vacuoles, while in amoeba it stores food before digestion. And in plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity rigidity to them. All right. Now the next topic is plastids. Color of the plant part and pigment. Plastids is basically a structure where your all the color, which you see of flower or any plant, it is the pigment is stored somewhere, right? जैसे हमारे स्किन में मेलानिन पिगमेंट हो स्टोर्ड होता है, तो वैसे ही वो कहीं तो स्टोर होगा ना, हर एक सेल में वो आपका वो पिगमेंट होता है। तो वैसे ही जो प्लास्टिड होता है उसमें आपके पास जो बेसिकली प्लांट्स होता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये जो कलर्स होते हैं जैसे ग्रीन, ऑरेंज, येलो, पर्पल और ब्लू और डार्क पिंक एक्सेट्रा, ये सारे जो पिगमेंट्स है, जैसे कि क्लोरोफिल विच इज़ ग्रीन कलर, कैरोटीन ऑरेंज कलर, एंथोफिल येलो कलर, एंथोसायनिन इज पर्पल एंड ब्लू एंड बेटालेन्स इज डार्क पिंक। सो ये जो कलर है वो कहाँ स्टोर होते हैं, इट इज़ स्टोर इन द प्लास्टिक्स. So why are plants leaves green and flowers red, yellow, orange or blue? It is because the organ which is gives such color present only in plant cells. It is called as plastids. Plastids are only found in plant cells. And plastids have double membrane and are of two types. Alright. हमेशा याद रखना, mitochondria double layer, plastids double layer, everything else is single layer, single membrane I mean. ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, वो प्लास्टिड जिसमें कलर जो होता है वो सफ़ेद होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि कलर ही नहीं होता है. और क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर्ड प्लास्टिड्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट आपके नीड के हिसाब से. एग्जाम्पल, रॉ ग्रीन टोमेटोज टर्न रेड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड सिंथेसिस ऑफ लाइकोपीन. जब कोई भी फ्रूट पकता है तो पहले वो कच्चा हरा कलर का होता है, उसके बाद धीरे 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 वो अपना कलर में जो उसका कलर होता है, जैसे एप्पल हुआ तो रेड हो जाएगा, मैंगो हुआ तो येलो हो जाएगा, राइट. तो चेरी है ग्रीन तो वो रेड हो जाएगी. सो इट द कलर चेंजेस, द पिगमेंट चेंजेस. एंड बट ये पिगमेंट कहाँ स्टोर होते हैं, इट इज़ स्टोर इन द क्रोमोप्लास्ट. लेकिन अगर वाइट कलर दिखता है आपको तो इट इज़ ल्यूकोप्लास्ट. नाउ क्लोरोप्लास्ट हम बात करते हैं. क्लोरोप्लास्ट अगेन इट इज़ हैविंग दिस ग्रीन पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड एज क्लोरोफिल. और ये पिगमेंट ही प्लांट को हेल्प करता है उसे खाना बनाने में उसकी मदद करता है. तो ये क्या ये ग्रीन कलर हम में होता है? ऑब्वियसली नहीं. सो बिकॉज plastid has pigmentations in it. Plastid store the pigments in it. So one of which is chloroplasts. So chloroplasts are important for the photosynthesis process that takes place in the leaves. Chlorophyll in chloroplast traps solar energy and convert it into chemical energy. And stroma in the chloroplast contains enzyme, DNA, ribosomes and carbohydrates that are necessary for the photosynthesis. Always remember, mitochondria has its own DNA, even chloroplast has its own DNA. ठीक है, जिसके पास खुद का डीएनए होगा वो खुद ही अपना प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जो कि स्टोर्ड होता है. कहाँ स्टोर्ड होता है? डीएनए में. फंक्शंस. सो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. ये क्षमता हमें नहीं होती है बिकॉज हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है. Chromoplasts give different color to flowers and fruits. So if you have chloroplast, which color we are talking about? It is green. Chromoplasts is basically the pigmentation changes, for example, ripening of fruit. Third is leucoplast, which are involved in the synthesis of storage of food like starch, oils and proteins. And then you have mitochondria and plastids, which can produce proteins as well as replicate themselves as they have their own DNA एंड राइबोसोम्स. डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है और राइबोसोम्स के पास वो बनाने का तरीका.
Who will make? See, we know the information, we can get information from anywhere, but who is going to process it? For example, your mom knows how to make a food from YouTube or somewhere, but then your mom is knows how to make it, so she's a ribosome then, and the information from wherever she has got it is DNA. So after studying the cell and So, after studying the cell and cell organelles, you must have come to know that all the function in plants and animal cells are taking place smoothly due to the organelles. तो सेल ऑर्गेनेल्स में क्या होता है, एक सेल होता है, सेल इतना छोटा सा है लेकिन उसके अंदर भी इतने ज़्यादा सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो हर एक सेल ऑर्गेनेल अपना अपना काम करते हैं, राइट, इट्स अ सिंगल सिंगल यूनिट, ठीक है, और ये सारे मिलकर एक सेल बनाते हैं. So such developed cells are called as eukaryotic cells, where all the functions has been already divided. But in prokaryotic cells, ये cell organelles present नहीं होते हैं, and that is why they are primary cell, very simple cell. पर eukaryotic cells में क्या होता है? ओके सारे काम डिवाइडेड होते हैं और वो सब अच्छे से एकदम मॉडिफाइड वे में होते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मॉडर्न सेल और यू कैन से यूकारियोटिक सेल्स. So last year you must have studied prokaryotic cells of bacteria. Now let's compare them. What is the difference? See, eukaryotic cells have size between 5 to 100 micrometers, but prokaryotic is 1 to 10 micrometer. Obviously, because in a cell you have so many cell organelles as well, so the size is going to increase a little bit. Number of chromosomes is more in eukaryotic cells as compared to prokaryotic cells, because chromosomes basically is the DNA. Okay, the structure of chromosome, the DNA has been wrapped in such a way to form a chromosome, so that this structure is going to prevent any damage to DNA. So now next is nucleus with the nuclear membrane, nucleolus and nucleoplasm. Nucleoid resembles nucleus. Mitochondria and plastids are present, but here they don't have any membrane bound cell organelle. Examples are present in highly evolved unicellular and multicellular plant and animals, and prokaryotic cells is present in bacteria. So this is it for this lesson. If you have any doubt, please ask me, and till then take care and keep reading.